Welcome, students. You must have heard of different philosophies, different schools of philosophical thoughts. The Western schools of philosophical thoughts, which we have in a syllabus in BA third semester, are idealism, जिसको हम आदर्शवाद कहते हैं, realism, यथार्थवाद, pragmatism, प्रयोजनवाद, and naturalism, जिसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं. Generally, these philosophies are supported by a lot of proponents and thinkers. Here, we are going to study one of the oldest philosophies of the world, that is idealism. We will be studying here idealism and its implications in the field of education. Points to be covered here are idealism as a philosophy. What does it imply? Fundamental principles of idealism, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा के सिद्धांत, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे आदर्शवाद के अकॉर्डिंग, करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ अ टीचर, डिसिप्लिन according to idealism, and in the end we will be having a recap of the entire thing. Looking at the proponents of idealism, आदर्शवाद के समर्थक. In the Western philosophy we can see that we have Socrates, Plato, Immanuel Kant, Hegel, Comenius, Pestalozzi, Spinoza. इंडियन थिंकर्स हु सपोर्ट आइडियलिज्म, जो आदर्शवाद की बातें करते हैं, वो है उनमें से है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर. Now let us analyze the term idealism. It is idea plus L plus ism. L is just for the sake of pronunciation. The main thing is the idea. आदर्शवाद आदर्शों की व्याख्या तो करता है, पर उसका मुख्य विषय विचार है. It is the idea which is the main, on which idealism lays most emphasis on. Now we come to the fundamental principles of idealism. आदर्शवाद के मूल सिद्धांत. Ideas are the only true reality. Idealism is simply based on the principle that ideas are the true reality and only thing worth knowing. Ideas are generated in a mind and translated through language and put forward. So the focus of idealism is the mind, where ideas are generated. No consideration for material values of life. It gives more emphasis on mental and spiritual aspects rather than material or the physical world. It contends that material and physical world is not the complete expression of reality. It is subordinate to the higher type of reality, a spiritual universe, a universe of ideas and values. Material world is the image of reality. Idealism distinguishes between two types of world. One is the material world and the other is the spiritual world. Material world, which is mortal, which is continuously changing, and the spiritual world, which is eternal, absolute, permanent, ultimate. Material world is just the image of the reality. कहते हैं भौतिक जगत सत्य का आभास मात्र है, इसके पीछे कोई मानसिक सत्य है जो इसे प्रकाशित करता रहता है. Spirits and mind constitute reality. Mind and soul rather than the matter and body are more important. Values are predetermined, absolute and unchangeable. Idealism believes that truth is ultimate. Man is not the creator of values, he just discovers the truth. Man is a supreme creation. The focus of
idealism is the mind. Man, because of his power of reasoning, because of his mind, is the supreme creation of God. Ross, in this respect, says human personality is the supreme value and constitutes the noblest work of God. Looking at the various branches of philosophy in the light of idealism, आदर्शवाद के संदर्भ में हम दर्शन की शाखाओं पर अगर रोशनी डालें तो मेटाफिजिक्स, दैट इज मूल मीमांसा, which studies the theory of reality. According to idealism, reality is an unchanging world of perfect ideas and universal truth. Epistemology, which is the theory of knowledge. So, according to idealism, knowledge is obtained when ideas are brought into consciousness. Axiology, study of values. According to idealism, what values are more correct? These are wisdom of goodness, discipline, order, self control, preservation of cultural heritage of the past. These values are cherished by idealist thinkers. Idealism, principles of education. आदर्शवाद शिक्षा के सिद्धांत. Education is based on spiritualism. According to idealism, education should be based on spiritualism. DM दत्ता का कहना है आदर्शवाद वो सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है. इसके अनुसार शिक्षा भी आध्यात्मिक होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कैपेसिटीज. आदर्शवाद मानसिक शक्तियों के विकास पर एम्फेसिस करता है. Teacher and curriculum are the center of education. Both individual and society are valued. व्यक्ति और समाज दोनों की वैल्यू आदर्शवाद के अनुसार है. God is the source of all knowledge. ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है. Idealism, एम्स ऑफ एजुकेशन. आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी. आत्म अनुभूति और व्यक्तित्व का विकास. व्यक्ति के भौतिक शरीर की अपेक्षा उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है और मानव जीवन का लक्ष्य उसी आत्मा का बोध कराना है. सोक्रेटिस का कहना था नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो. एंड वर्च्यू इज नॉलेज, ज्ञान ही सद्गुण है. जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा वो ज्ञान के मार्ग पर स्वतः चलेगा और आत्म अनुभूति कर सकेगा. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बिकमिंग वंस हाईएस्ट सेल्फ. इट इज सेड दैट फिजिकल सेल्फ इज एट द लोवेस्ट लेवल. जो आपका भौतिक स्व है वो सबसे निचला स्तर है जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना है. As a child first realizes his physical self, then he comes in contact with other members of his family and realizes himself socially. When he starts thinking, he realizes himself psychologically, thinking and feeling. He realizes himself psychologically, and when he is beyond material and physical world, material and physical things, then he comes to realize himself spiritually. So the idealist aim at realizing oneself spiritually, that is becoming one's highest self. Next aim is realization of truth, beauty and goodness. सत्यम, शिवम और सुंदरम की अनुभूति करना. जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर. इस बात को समझना, अनेकता में एकता की अनुभूति करना. नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज.
Next is preparation for the whole life. It aims at development of a child into a complete man with full mental, intellectual, moral and cultural uplift. So these are the aims of education. आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य. Curriculum according to idealism. आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? What type of curriculum idealist thinkers promote? It is given here. Idealist curriculum is developed according to ideals and eternal values. बालक के वर्तमान अनुभव के ही महत्वपूर्ण नहीं, वरन संपूर्ण मानवता के अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं. इसलिए बाल केंद्रित के बजाय आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति नहीं अपितु बुद्धि ही सब चीजों का मापदंड है. सोक्राटिस कॉन्ट्रोडिक्टिंग सोफिस्ट थिंकर्स को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए कहते हैं, माइंड नॉट मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. इट प्रमोट्स ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स. ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स आर एम्फेसाइज्ड बाय आइडियलिस्ट थिंकर्स. सभी विषयों के आदर की दृष्टि से देखते हैं, पर इस बात पर बल देते हैं कि सत्य का ज्ञान, शिव की प्राप्ति, सुंदर की अनुभूति हो. फॉर दिस for intellectual development, they want children to study language, literature, history, geography, mathematics and science. For aesthetic development, they promote art and poetry. For moral development, they want religion and ethics to be taught to children. Methods of teaching according to idealism. आदर्शवाद के अनुसार पाठन विधि कैसी होनी चाहिए? They advocate no specific method. Any method of teaching can be employed. Socrates advocated question answer technique. Plato emphasized on dialectic method. वार्तालाप के जरिए से पढ़ाई हो सकती है. Hegel emphasized on logic, तर्क विधि. Descartes from simple to complex, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए बालक को टीचिंग कर सकते हैं. So they advocated no specific method, but they wanted that the values they cherished, the idealist thinkers cherished, should be promoted. रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. आदर्शवाद के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर. शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है. टीचर शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल. उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए. छात्र के जीवन का मार्गदर्शक होना चाहिए टीचर को. Teacher's work is to pass on the knowledge of reality. शिक्षक का कार्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करना भी है. Teacher to guide towards utmost possible perfection. Teacher should guide the students towards their utmost possible perfection. He should be morally high, intellectually developed, and culturally advanced. He should act as a role model. Discipline in view of idealist thinkers. आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? They advocate impressionistic discipline. प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए टीचर का, जो डिसिप्लिन बनाए रखे. Freedom to be restricted by ideals. Freedom is essential, but it should be restricted. It should be guided. Unguided freedom is not promoted. It should be guided by ideals. Discipline must be the product of students' moral and cultural domain. They advocate self-discipline, and force is not at all desirable.
Now we have the recapitulation of the entire thing. Looking at the points here, we can say idealism emphasizes on moral and spiritual education. They advocate integrated curriculum, believe in eternal values, important place has been given to teacher, psychological teaching methods. They don't advocate or restrict themselves to any particular teaching method, but any teaching method can be employed on the point that it advocates the values which idealist thinkers cherish, and it emphasizes on self discipline. It should be guided discipline. It should be guided by the ideals. So with this we come to the end of this unit. I hope you have enjoyed this. Thank you. Thank you, students. Now, in our next session, in our next video, I will be discussing with other philosophies which we have in a syllabus. Thank you.